आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हम लोगों का चैनल टैक्स एडू में। आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, जो हम लोगों का इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो होगा। हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोगों का वेबसाइट www.taxedu.in में जाके भी काफी सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? According to A6 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। According to AA6, depreciation is a measure of wearing out, consumption or other of value of a depreciated asset arising from use, effusion of time or obsolescence through technology and market changes. Depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the assets. Depreciation includes amortization of assets whose useful life is predetermined. The American Institute of Certified Public Accountants AICPA employed the definition as given below. Depreciation accounting is a system of accounting which aims to distribute the cost or other basic value of tangible capital asset less salvage value, if any, over the estimated useful life of unit, which may be a group of assets. In a systematic and retention manner, it's a process of allocation, not of valuation. Depreciation for the year is the portion of the total charge under such a system that is allocated to the year. From the above definitions, it is clear that each accounting period must be charged with a fair proportion of the depreciable amount of the asset. During the expected useful life of the asset, the depreciable amount of an asset is in the historical cost less the estimated residual value. Finally, it could be concluded that depreciation is a gradual reduction in the economic value of an asset from any cost. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का पूरा डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे आपको डेप्रिसिएशन का किसको बोलते हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट को हम लोग मानते हैं, फिक्स एसेट से जो हर साल एक डेप्रिसिएशन अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि यूजफुल लाइफ के अंदर। तो आगे बढ़ते हम लोग यही बातें करते रहेंगे। देखिए जो दिया गया है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, depreciation and amortization. The terms depreciation, and amortization are used often interchangeably. However, these different terms have been developed in account uses of describing this process for different type of assets. These terms have been described as follows. Depreciation. Depreciation is a concern with charging the cost of man-made fixed asset to operations and not with determination of asset value for the balance sheet. In other words, the term depreciation is used when expired utility of physical asset, building machinery of equipment is to be recorded. Depreciation क्या होगा देखिए यहाँ पे लिखा गया है, depreciation is concerned with charging the cost of man-made fixed asset to operation. जो हम लोग मशीनरी खरीदते हैं, जो हम लोग man-made fixed asset of the operation करने के लिए जो हम लोग फिक्स एसेट खरीदते हैं वो डिप्रिसिएशन वहां से ही बिल्डिंग मशीनरी ऐसा एग्जांपल भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला जो ऑप्शन है वो है depreciation. The term is applied to the process of removing an available but irreplaceable resource such as extracting coal from a coal miner or oil out of an oil well. Depreciations differ from depreciation in that the former implies removal of a natural resource, while the latter implies a reduction in the service capacity of an asset. अभी हम लोग जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों का एग्जाम के बारे में भी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आप बैठिए, एमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन आता रहता है। तो व्हाट इज एमोर्टाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज टर्म as amortization. The intangible asset like patent, copyrights, leasehold,
and goodwill are recorded at cost in the books of accounts. Many of these assets have a limited useful life and are therefore written off. अमोर्टाइजेशन क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है पेटेंट कॉपीराइट जो इनटेंजिबल एसेट है जिसका हम ट्रांस नहीं कर सकते, वो एसेट भी होता है ना, गुडविल जैसा होता है, आपका कॉपीराइट आपने किया है तो पेटेंट किया है, वो जो होता है वो अमोर्टाइजेशन हम लोग बताएंगे. ऑब्सोलेंस is referred to the decline in the useful life of an asset because of factors like technological achievements, changes in the market demand of the product, legal or other restrictions और improvement in production process में हम लोग obsolescence के बारे में बोलेंगे. तो need for providing depreciation, ये जो depreciation होता है तो what is the need for providing depreciation, ये हम लोगों का इस स्लाइड से पता चल जाएगा. देखिए क्या लिखा गया है. The need for providing depreciation arises on account of the following points. 1. The ascertain the profit or losses. The true profit or losses could be ascertained when all costs of earning revenues have been properly charged against them. Fixed assets like building, plant and machinery, furniture, motor vehicles, etc. are important tools in earning business income. But the cost of the fixed asset is not charged to profit and loss of the accounting period in which the asset is purchased. Therefore, the cost of the fixed asset less its salvage value must be allocated rationally to the periods that receive benefit from the use of the asset. Thus, depreciation is an item of business expenses and must be provided for a proper matching of cost with the revenue. Number two, the show the asset as its reasonable value. The asset get decreased in their value over the period of time on accounts of various such as passage of time, constant use, accident, etc. Therefore, if the depreciation is not charged, then the asset will appear in the balance sheet at the overstated value. This practice is unfair as the balance sheet fair fail to present the true financial position. लेकिन हम लोगों का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे बोला गया है ये ट्रू अकाउंटिंग फिनेंशियल पोजीशन हम लोगों को बैलेंस शीट में दिखाना है. थर्ड पॉइंट में देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. बिजनेस एसेट बिकम्स यूजलेस एट द एक्सपायरी ऑफ देयर लाइफ एंड देयरफॉर नीड रिप्लेसमेंट. द कैश resources of the concern are far from being distributed by way of divided by providing for depreciation. The resources to serve saved, if set aside in each year, may be allocated to replace it at the end of life of the asset. Number 4, to reduce income tax. Income tax का reduce के भी ऑप्शन है. देखिए if tax is paid on the business income without providing for depreciation, then it will be the excess to the actual income tax. This is a loss to the businessman. Okay, so this for the calculation tax depreciation should be deducted be from income similar to the other expenses. Methods of recording depreciation. Depreciation अगर आप accounting डबल एंट्री सिस्टम में आप डालेंगे तो आपको डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा ये हम लोग यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा. देखिए these are two methods of recording depreciation in the books of accounts. When a provision for depreciation accounts is maintained, the following journal entries are passed in case method is followed. Depreciation account debtor to provision for depreciation account for providing depreciation. Profit and loss account debit to depreciation account for closing depreciation account. Provision for depreciation account debit to asset account entry for sale of asset. And any amount realized an account of sale of the asset is credited to the asset account. The balance, if any, in the asset account is transferred to the profit and loss account. देखिए यहाँ पे when a provision for depreciation account is maintained तो ये एंट्रीज होगा और when a provision for depreciation account is not maintained तो क्या एंट्री होगा. देखिए the following journal entries are passed in this method. Depreciation account debtor to asset account. Directly एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. इसमें क्या है एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ये क्लोज डाउन जन होगा एंट्री फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में देखिए यहाँ पे दिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट तो यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंट्री फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्या होगा इन केस द एसेट इज सोल्ड द अमाउंट realized is credited to the asset amount any profit or loss on sale of the asset is transferred to the profit and loss account. तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और हम लोगों का बने रहने के लिए हम लोगों का चैनल टैक्सेड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हम लोग का वेबसाइट में भी विजिट कीजिए थैंक यू वेरी मच